Hello, very good afternoon to all of you. Am I audible, visible? Good afternoon, Shubham, Hayat. Very good afternoon, Lipsa. Am I audible, visible to all? Audible, visible to all of you? Yes. Namaskar, Lipsa, Manas. I welcome all of you to this session. Shubham is asking, sir, apanଙ୍କର କୋଉ honors? I come from a diversified background. 12th पर्यंत plus 2 पर्यंत I was a student of science stream. Science पढ़ुଥିଲି, physics, chemistry, mathematics, economics was fourth elective. Then information science, telecommunication, science background again, graduation. Then I was working in Infosys for somewhat around 2.5 to 3 years as a software developer. Then I changed my stream, MA in public administration, MA in philosophy, then law, LLM in access to justice, MA in corporate law. So this is a mix of art, science and legal studies. ठीक है. Anyway, coming to our today's topic of discussion, planning in India. Planning ऊपर हम आज discuss करिबा. Planning ऊपर discuss करिबा. Before that जेमती as usual मु कहितली हमें किछि question discuss करिबा. Last class रे हमें कोन पढ़थिला? I hope all of you remember economic reform in India. Last time हमें economic reform ऊपर पढ़थिले. Why to give importance to PSU public sector undertaking को काहे की importance दवा दरकार. PMF India केमती PMF choose कला, industry को केमती agriculture को choose कला. Last class गत काली रा class रे पढ़ैथि. हां कि नहीं? बुझा एटा फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट क्लास हेले भी बुझी पारिबो सब, किछि असुविधा हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, डोंट वरी. सो मते जस्ट रिमाइंड कर देबे. जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 परे इंडिया इंडस्ट्री को ना एग्रीकल्चर को तार पीएमएफ हिसाब रे चूज करथिला. इंडिया एग्रीकल्चर को ना इंडस्ट्री को तार पीएमएफ हिसाब रे चूज करथिला. क्विक समस्त कहि. नमस्कार दिव्य रंजन. जस्ट टू रिकैप, आईएमएफ हिसाब रे हम कहा को चूज करथिले, सॉरी पीएमएफ हिसाब रे हम कहा को चूज करथिले, टू इंडस्ट्री और टू एग्रीकल्चर. इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को हम केबे चूज करले? 1947 रे. 1947 रे इंडिया चूज करला इंडस्ट्री को तार पीएमएफ हिसाब रे. then in the year 2002 we have changed it to agriculture. 2002 रे हम को चेंज करथिले कोडी की ना एग्रीकल्चर. क्लियर? सो आज आम कवर करवा प्लानिंग कौन, प्लानिंग रा नेचर, स्कोप, रिक्वायरमेंट, प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, ये सब इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर मु पढ़ेबी. ता पूर्वरु केतरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा आज यूजुअल कहिथिन. फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्लेन्ड बाय, the term economic growth is explained by structural changes in the economy, increase in the per capita production, increase in the per capita income, all of the above. कौन हम? आंसर कौन हो समस्त कहबे. ये टॉपिक मु डिस्कस कर चलची, आरंभ सीरीज रे ही डिस्कस करची, यूट्यूब सेशन में डिस्कस करची, आक्रोश बैच रे पढ़ैची.
बहुत सिंपल टॉपिक. I expect everyone to answer. I expect everyone to answer. पूरा इकोनॉमिक सीरीज को हमें कवर करिबा, एडिटोरियल एनालिसिस कवर करिबा, मैगजीन एनालिसिस कवर करिबा. So it will be a complete preparation for OPSC OCS examination, prelims, mains, interview सबु पई हमें प्रिपेयर हवा. मेंस रो रिजल्ट बहुत जल्दी आसीबो जाउची. जो माने लास्ट टाइम मेंस देखले तार रिजल्ट बहुत जल्दी आसीबो जाउची. इंटरव्यू हबो, पुनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अक्टोबर रे हबो. नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अक्टोबर रे हबो. So this term economic growth is explained by economic growth रे हमें कोन देखुले ना, this is the quantitative aspect. Quantitative aspect थिला structural change in the economy. Structural change in the economy means primary sector ru shift हेकी कोठी के जाउचंती worker ना secondary and tertiary sector. Increase in per capita production and per capita income. तामाने production total production increase हेले per capita production भी बढ़िबो, total income increase हेले per capita income भी बढ़िबो. सो ये कहूँ इकोनॉमिक ग्रोथ जितेबाला हुए पर कैपिटा इनकम भी होची एवं पर कैपिटा ग्रोथ भी होची. सो इट कौन लिखला हम ए बी सी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट हियर, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट हियर. ताले करेक्ट आंसर कौन हबो? करेक्ट आंसर कौन हबो? करेक्ट आंसर हला कि ना डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा ताले हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following scenarios explain economic development? Which of the following scenario मृत्यु कौन लिखते सर? जब्बाज बैच रे क्लास किछि भी होनी, ओनली करंट अफेयर्स, अदर सब्जेक्ट किछि भी क्लास होनी. सो जोटा हमर अछि स्टूडेंट क्वेरी सेक्शन ना, सेठी क्वेरी पचारंतु को क्लास कोन अछि सेटा कहि परिबे. एनी क्वेश्चन अबाउट ओसीएस एग्जामिनेशन रिलेटेड, बैच रिलेटेड जदि किछि क्वेश्चन अछि ताले पचारंतु. आई हैव इन्फॉर्मेशन ऑन दैट. रेस्ट ऑफ द एग्जाम ऊपर जदि किछि डाउट अछि स्पेसिफिक क्वेश्चन ताले आपण सेठी पचारंतु, आंसर पाइबे. डोंट वरी, जहां पे क्लास थिबो नथिबो सब आंसर सेठी मिल जिवो हैला. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा हमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मते कोन ग्रोथ एठी डिस्कस कला में ग्रोथ ऊपर जोटा गोटे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. एठी हमें डिस्कस करूचे डेवलपमेंट ऊपर. डेवलपमेंट ता कोन ना, डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. डेवलपमेंट ता कोन ना, डेवलपमेंट ता गोटे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. ताली ये चारिटा ऑप्शन ए बी सी डी को हमें टिके एग्जामिन करबा. खाली ए बी सी डी हमर आंसर जानिबा दरकार नहीं, रादर ए काहे कि हला बा बी काहे कि हला सेटा मते जानिबा इंपोर्टेंट. एक्सप्लेनेशन इज इंपोर्टेंट. So it is improvement in the distribution system, improvement in the technology, improvement in the production. ये चारिटा भितर कोटा हेले बा तीनटा भितर कोटा हेले हम ताको कहबा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोली. एटी कोन हो आंसर समस्त कोंदु. समस्त गत काली क्लास रे प्रेजेंट थिले, आज जो मान अछन एवरीवन प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास. सो एटी डेवलपमेंट ऊपर हम डिस्कशन करते. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप होची, यार अर्थ कोन? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप होची तार अर्थ कोन? ता माने टोटल प्रोडक्शन जति कि होची, खाली प्रोडक्शन हेले हबनी, तार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मध्ये हवा दरकार. एठी हम तीनटा जिंस देखुतिले, गोटे हला एक्सेसिबिलिटी, गोटे हला अफोर्डेबिलिटी, गोटे हला अफोर्डेबिलिटी, आ गोटे हला accessibility, affordability and availability of food grains हैला. ये तीनटा जिंस जदि अवेलेबल हो जाउछ, खाली प्रोडक्शन हेले हबनी, ये तीनटा जदि एक्सेस करि परछ हमें ताकू इजीली, जदि सेटा अवेलेबल होउची इजीली, प्लस जदि सेटा अफोर्डेबल प्राइस रे अछि, ये तीनटा कंडीशन जदि सैटिस्फाई करूची ताहले हम कहबा ताकू दैट इज द रियल ग्रोथ बा दैट इज द रियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. रियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो ये कहूँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे इंप्रूवमेंट हम. देन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी रे जदि डेवलपमेंट हुए ताहले मते हम कोन कहली. मानस को जो सर नथिली बिकॉज कंधमाल रे बहुत वर्षा इलेक्ट्रिसिटी नथिला. डोंट वरी, नो प्रॉब्लम.
या सबूर रेकर्डेड क्लास अवेलेबल अच्छी प्रथम कथा। सेकेंड पॉइंट अपार्ट फ्रॉम रेकॉर्डेड क्लास जदि हम देखिबा रेगुलरली हमर क्लास मध्ये होउची रेगुलरली हमर क्लास मध्ये होउची वेडनेसडे आ थर्सडे इकोनॉमिक्स रो सेशन होउची आरंभ सीरीज रे यूट्यूब रे गोटे रु 2:30 पर्यंत यूट्यूब रे गोटे रु 2:30 पर्यंत प्रत्येक बुधवार और गुरुवार क्लास रहउची हमर से क्लास को अटेंड करि परिबे ता व्यतीत वीकली सीरीज रेकॉर्डेड सेशन मध्ये अपलोड होउची यूट्यूब रे जेमति कि एडिटोरियल एनालिसिस हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 1 वीक गोटे वीक रे जहा जहा से सब अपलोड होउची संडे एवरी संडे एमसीक्यू सीरीज आसीबो प्रीलिम्स पई मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू 500 एमसीक्यू प्लस वन शॉट इकोनॉमिक्स आसीबो जोथरे पूरा एवरीथिंग कवर्ड हबो जोथरे सब जिंस कवर हबो इकोनॉमिक्स रो देन आ गोटे मैगजीन एनालिसिस आसीबो फॉर ओसीएस ये सब इंपोर्टेंट टॉपिक को ये प्लेटफॉर्म रे मु नउची एंड थ्रू आउट द वीक यू विल बी गेटिंग डिफरेंट क्लासेस। Now coming to this question, next question को आसीबा improvement in the technology technological upgradation एटा डेवलपमेंट हबो कि नहीं जदि टेक्नोलॉजी डेवलप होची ताहले हमें ताको डेवलपमेंट कहबा कि कहबानी यस और नो यस और नो टेक्नोलॉजी डेवलप हेले हमें ताको डेवलपमेंट कहबा कि नहीं आंसर इज यस टेक्नोलॉजी डेवलप हेले कोन हबो ना अधिक प्रोडक्शन हबो कोन हबो एटी ना प्रोडक्शन इंक्रीज हे जिवो हैला देन इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़िले ताको हमें डेवलपमेंट कहबा कि नहीं यस और नो डेवलपमेंट प्रोडक्शन बढ़िले हमें ताको डेवलपमेंट कहबा कि नहीं व्हाट इज द आंसर यस मानस यस लक्ष्मी यस प्रोडक्शन बढ़िले मध्ये हमें ताको डेवलपमेंट बोली कहबा ताली तीनटा जाक ऑप्शन करेक्ट नहीं व्हाट इज द करेक्ट आंसर ताले देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर ए करेक्ट बी करेक्ट सी करेक्ट ए करेक्ट बी करेक्ट सी करेक्ट ताले करेक्ट आंसर की हैला भितरु एबीसीडी भितरु डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हम एठी हमें ग्रोथ रो फैक्टर ऊपर डिस्कस करूचे ग्रोथ रो फैक्टर ऊपर डिस्कस करूचे आको दुई भाग रे डिवाइड करि परिबा गोटेला इकोनॉमिक फैक्टर आ गोटेला नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ये कुछ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर आइडियल लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ग्रोथ ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन इन कोर्स ऑफ टाइम कैपिटल एक्युमुलेशन या भीतर कोटा को हमें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर बोली कहूचे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ ग्रोथ भल भाव चारिटा तक ऑप्शन को देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन ए को आसीबा आइडियल लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर यार अर्थ कोन ना प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग अछि प्लस ये कोन करूची प्रॉपर लेजिस्लेशन करूची लेजिस्लेशन अर्थ लॉ फॉर्मुलेशन करूची प्रॉपर लॉ फॉर्मुलेशन करूची सो ताको हम कोन कहले आइडियल लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर सो इट इज वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ और नॉट यस इट इज रिक्वायर्ड जेमते हम देखुचे स्मार्ट इंडिया सॉरी कौन सेटा स्टार्टअप इंडिया बा स्मार्ट सिटीज ए जो टाइप रो स्कीम आसुची ये सब स्कीम होचंदी दे आर लेजिस्लेशंस थ्रू डिफरेंट लेजिस्लेशन स्कीम आसुची तो लेजिस्लेशन थ्रू रे आसुची किए लेजिस्लेशन करूची गवर्नमेंट करूची बा लेजिस्लेचर आको फॉर्मेशन करूची सो गोटे स्ट्रांग लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर जदी रुहे जदी गोटे स्ट्रांग लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर रुहे ऑटोमेटिकली कोन बेनिफिट पाइबा हमें ना सी इट विल क्रिएट or it will develop ease of doing business कौन कहनी ease of ये टर्म ता मन रखिबे ease of doing business ये ease करियो यार अर्थ कोन सिंपलीफाइड वे रे सिंपल वे रे बा सिंपलीफाइड वे रे केमते डेवलप करियो ये सब सर पूछी सो आइडियल लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड और नॉट यस इट इज रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ नेक्स्ट क्वेश्चन कोची नेक्स्ट पॉइंट कोची कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स रा आवश्यकता अछि कि नहीं नेचुरल रिसोर्स रा आवश्यकता अछि कि नहीं मते कोन यस और नो नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ और नॉट यस रिक्वायर्ड काइना रिसोर्स सेले ही डेवलपमेंट हबो रिसोर्स सेले ही प्रोडक्शन हबो रिसोर्स सेले ही प्रोडक्शन हबो सो इट इज रिक्वायर्ड एवं नेचुरल रिसोर्स एटा इकोनॉमिक फैक्टर ना नहीं यस एटा होची गोटे इकोनॉमिक फैक्टर देन ग्रोथ ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ हेले मध्ये कोन कहूची डिमांड बढ़िबो पॉपुलेशन ग्रोथ हेले कोन हो ना डिमांड बढ़िबो डिमांड बढ़िले डिमांड अनुसार सप्लाई करिया पड़िबो एंड हेंस प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रोथ से अनुसार प्रोडक्शन बढ़िबो एवं ग्रोथ मध्ये बढ़िबो कोन कहली पॉपुलेशन इंक्रीज हेले प्रोडक्ट डिमांड बढ़िले प्रोडक्शन बढ़िले ग्रोथ बढ़िबो सो अगेन इट इज एन इकोनॉमिक फैक्टर सो
हाँ फोर्थ पॉइंट कैपिटल एक्युमुलेशन कैपिटल टा होची गोटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आमे पूर्व बुझले एटा कोन दिस इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोन कहली कैपिटल टा होची गोटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल फॉर्मुलेशन हेले कैपिटल एक्युमुलेशन हेले कैपिटल बढ़िले हमको बेनिफिट कोन हबो कैपिटल एक्युमुलेशन हेले हमको बेनिफिट कोन हबो ना एटा गोटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये बढ़िले ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो ताने देखले चारिटा जगह रे ग्रोथ होची नो कैपिटल इज इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक फैक्टर काइनो जेहेतु एटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये गोटे इकोनॉमिक फैक्टर थर्ड ऑप्शन ग्रोथ ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन ये गोटे इकोनॉमिक फैक्टर बिकॉज इट डिमांड इंक्रीज होची सेकंड ऑप्शन कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये गोटे इकोनॉमिक फैक्टर काइना एटी ग्रोथ होची सो 2 3 4 एटी हमें कोन देखुचे ना एटी हमें ग्रोथ देखुचे ग्रोथ इज देयर एंड ये तीनटा जा कहउछन कोन ना ये तीनटा जा कहउछन इकोनॉमिक फैक्टर ये तीनटा कोन कहउछ हमें इकोनॉमिक फैक्टर एटा कोन फर्स्ट इज अ पॉलिटिकल फैक्टर First is a political or governance related factor. ताले करेक्ट आंसर कौन हबो ये कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ ग्रोथ ये कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ ग्रोथ ताले कोटा भीतर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हे गला या भीतर कोटा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हे गला ऑप्शन नंबर 1 आइडियल लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर आवश्यकता अछि फॉर ग्रोथ बट दिस इज नॉट इकोनॉमिक फैक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी या ऊपर डिस्कशन करथिले मन अछि कि नहीं पीपीपी रो फुल फॉर्म कोन परचेजिंग पावर पैरिटी हैला ये कौन को तार ऑप्शन ना थ्योरी दैट टेल्स अस दैट एक्सचेंज रेट्स बिटवीन करेंसीज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर परचेजिंग पावर इज द सेम इन बोथ द कंट्रीज जीडीपी डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट a measure of income inequality a measure of infant mortality rate in the developing countries these are four options ये चारिटा ऑप्शन को हमें देखिबा which is true and which is false सेकंड ऑप्शन देखो एटी को जीडीपी डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट या सहित किछि रिलेशन नै एम्ति किछि नै जीडीपी रे एक्सचेंज रेट को डिवाइड करले कोन हो देन मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी को हमें केमति मेजर करथले हमें डिस्कस करथले अबाउट गिनी कोएफिशिएंट बा लॉरेंज कर्व ता थ्रू हमें एटी मेजरमेंट करि परछे सो पीपीपी सहित किछि रिलेशन नै infant mortality rate of PPP infant mortality rate is different infant mortality rate कोन ना 1000 number of child birth हेले 1000 number of child birth रे केतटा चाइल्ड रो डेथ होउची तब हम कहतले कोन ना infant mortality rate सो यार पीपीपी सहित किछि रिलेशन नाउ कम टू फर्स्ट ऑप्शन कहूची एक्सचेंज रेट करेंसी माने कर मो पाखरे 200 टंका अछि 200 टंका अछि रुपीस रे एवं 200 टंका रे मु देखिली मु 5 केजी पोटैटो परचेज करि परबी कोट ना इंडिया रे मु पोटैटो परचेज करबी केते ना 5 केजी सेम 200 टंका को हमें डॉलर रे कन्वर्ट कर दबा यूएसए जीवा यूएसए रे देखिबा हमें केते पोटैटो परचेज करि परछे जदि 5 केजी पोटैटो यूएसए रे भी 200 टंका को डॉलर रे कन्वर्ट कला पर हमें परचेज करि परछे ताल देखिबे कि दीटा जाका कंट्री एठी इक्वल अछि कोन अछि एठी कंपैरिजन ऑफ करेंसी बा एक्सचेंज रेट एठी इक्वल अछि हला एको कोन परचेजिंग पावर पैरिटी सेम अमाउंट रे दीटा अदर कंट्री रे हमें केते प्रोडक्ट परचेज करि पारुछे कोन देखछे एठी केते प्रोडक्ट परचेज करि पारुछे ताले एठी व्हाट इज द करेक्ट आंसर ए बी सी डी बितरु करेक्ट आंसर कोन हो परचेजिंग पावर पैरिटी रिलेटेड करेक्ट आंसर ताले एठी कोन हो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन सब आसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस व्हाट इज द करेक्ट आंसर लक्ष्मी ए लिप्सा ए दिव्य रंजन ए यस सो आंसर कोन रहता लेठी करेक्ट आंसर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आदम स्मिथ एडवोकेटेड फॉर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आदम स्मिथ एडवोकेटेड फॉर फर्स्ट ऑप्शन लासेस फेयर सेकंड द इनविजिबल हैंड थर्ड फ्री ट्रेड पॉलिसी फोर्थ कॉम्पिटिटिव मार्केट फोर्थ कौन कहली फोर्थ इज कॉम्पिटिटिव मार्केट तालार प्रॉपर आंसर कौन हबो लासेस फेयर कहले हमें कौन बुझुचे कार मन अछि लासेस फेयर रो मीनिंग कौन बहुत इंपोर्टेंट ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन लासेस फेयर रो अर्थ होछि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट कौन कहले हमें दिस इज नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट एटी कौन करथि ना स्टेट इंटरफेयर करूनी ताले किए इंटरफेयर करिवो दीटा सेक्टर अछंती इकोनॉमी रे गोटेला पब्लिक सेक्टर गोटेला प्राइवेट सेक्टर बा गोटेला गवर्नमेंट आ गोटेला किए ना प्राइवेट सेक्टर कौन कहली
गोटे है गवर्नमेंट आ गोटे है प्राइवेट सेक्टर सो नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट रे एटी किए इंटरफेयर करछि ताले ना ओनली प्राइवेट सेक्टर किए ना ओनली प्राइवेट सेक्टर एटी इंटरफेयर करुछि सो नो स्टेट स्टेट रो पावर किछि नाही नो स्टेट पहले एटा कोन हो लास्टेज फेयर आदम स्मिथ कहा ऊपर फोकस करथले ना आदम स्मिथ कहथले कैपिटलिज्म ऊपर कहा ऊपर इज पायोनियर ऑफ कैपिटलिज्म ताल फर्स्ट ऑप्शन हैला नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट जदि स्टेट इंटरफेयर करूनी ताहले एग्जिस्ट किए करिवो सेठी ना प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करिवो प्राइवेट सेक्टर सब रेगुलेट करिवो सेकंड पॉइंट इनविजिबल हैंड रो अर्थ कोन एडा कोआ जाउची इनविजिबल हैंड का कोआ जाउची ना दिस इज द मार्केट फोर्स ये हला मार्केट फोर्स माने किए मार्केट फोर्स माने प्राइवेट सेक्टर मार्केट फोर्स माने प्राइवेट सेक्टर एटा केमती इनविजिबल हैंड होतला मने थिबो हम पढैतिली इनविजिबल हैंड रे हम एग्जांपल लेथिली सेम क्वांटिटी एवं सेम क्वालिटी रो गोटे प्रोडक्ट अछि लेट्स टॉक अबाउट अ टूथपेस्ट 100 ग्राम रो टूथपेस्ट सेम क्वालिटी रो कोलगेट बिक्री करूची 50 टंका रे ये कहूची क्लोजअप सेटा को केते बिक्री करिया दरकार क्लोजअप आपको 50 करिवो कि 40 करिवो कि 100 करिवो एटी गवर्नमेंट इंटरफेयर करिवार आवश्यकता नाही एटी गवर्नमेंट इंटरफेयर करिवार आवश्यकता नाही इट विल बी आपको किए डिसाइड करिवो ना इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर जदि क्लोजअप कोलगेट 50 टंका रे बिक्री करथिबा प्रोडक्ट को क्लोजअप 100 टंका रे बिक्री करे ताहले एटा को कंज्यूमर परचेज करिवोनी कंज्यूमर काहे की परचेज करिवोनी ना एवरी कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर किए ना जे इकोनॉमिक डिसीजन गुडा को प्रॉपर्ली निए ताको रैशनल कंज्यूमर बोली कहा जाय सो एटी या क्लोजअप रो रेट जदि अधिक हो जाय ताहले कंज्यूमर आको परचेज करिवो बुझिउची कि नै माने ये दि जण को भितर कंपटीशन हबो कोठी नै इन द मार्केट रे से जो फोर्स रे हबो ताको कहा जाय मार्केट फोर्स कोन कोन ताको जो फोर्स रे हबो ताको कोनती मार्केट फोर्स हैला सो ये मार्केट फोर्स एटी डिसाइड करिवो ता कहला में इनविजिबल हैंड दिस मार्केट फोर्स इज कॉल्ड इनविजिबल हैंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री ट्रेड पॉलिसी कोन माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऊपर किछि रेस्ट्रिक्शन नाही एक्जिम ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऊपर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एटी किछि रेस्ट्रिक्शन रहइबोनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऊपर सेटला फ्री ट्रेड पॉलिसी देन इज कॉम्पिटिटिव मार्केट इट एग्जांपल देखि बुझी पर तमे कोलगेट और क्लोजअप भीतर कोन होती ना देयर इज अ कंपटीशन सो 1 2 3 4 ये चारिटा जाक रिलेटेड टू कैपिटलिज्म और नॉट वर्तमान आंसर कोन कोन हो कोडा वर्तमान आंसर समस्त कोन कोडा हो रोहित लेट आसलो नो प्रॉब्लम बहुत कम क्वेश्चन हम डिस्कस करचे यू कैन गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स एज वेल ताले एटी आंसर को कोन हो आदम स्मिथ कैपिटलिज्म को फोकस कले एवं कैपिटलिज्म रो हम कोन देखुचे को पॉइंट ऊपर हम एटी देखुचे देखो लासेस फेयर इनविजिबल हैंड फ्री ट्रेड पॉलिसी कॉम्पिटिटिव मार्केट ये चारिटा रो कोड आंसर हो आदम स्मिथ एडवोकेटेड फॉर बा इनडायरेक्टली हम जदी कहिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्टली जदी हम कहिबा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग are the characteristics of capitalism which of the following are characteristics of capitalism indirectly a question he paribo free trade policy capitalism required or not yes it is required export import ta upare kon se restriction न रहबा दरकार competitive market required or not yes required invisible ban अछि कि नहीं yes laissez faire अछि कि नहीं yes so it one of answer is all of these clear very good afternoon पूजा clear एटा ताले कोन होबो all of these is the correct answer ताले next question को जिबा हमें समस्त बुझिले ना किए बुझुनांती next question को जिबा बुझी होची क्लैरिटी आसुची इकोनॉमिक्स रे ना डाउट लागुची का किछि कष्ट लागुची बहुत गुडे बेसिक कांसेप्ट ऊपर हमें डिस्कशन कलेन ओलिगोपोली मार्केट कहि भी डिस्कस करबी ता ऊपर डोंट वरी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स रा हमें डिस्कस कलेन इंट्रोडक्शन बेसिक कांसेप्ट्स डिमांड सप्लाई ग्राफ ग्रोथ डेवलपमेंट इन्फ्लेशन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी आज डिस्कस करी हमें प्लानिंग ऊपर क्वेश्चन भी बहुत गुडे प्रैक्टिस कलेनी ओके
So what was the policy of British rulers in India for industrialization? What was the policy of British rulers in India for industrialization? That option देखिए हमें first कहूची the British rulers wanted to make Indian importer of both primary and finished goods. India import करियो primary और finished goods. Second, British rulers wanted to make Indian exporter of both primary and finished goods. Third, British rulers wanted to make India an importer of primary goods from Britain and exporter of finished goods to Britain. Fourth, British rulers wanted to make India an exporter of primary goods to Britain and importer of finished goods from Britain. So ये क्वेश्चन कंफ्यूज करूची कहा भितरे ए क्वेश्चन हमको कंफ्यूज करूची कहा भितरे दीटा टर्म को नेकी ये क्वेश्चन हमको कंफ्यूज करूची दीटा वर्ड को नेकी ये क्वेश्चन हमको कंफ्यूज करूची कौन कौन या प्रथम हैला एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर कहार ना फिनिश्ड गुड्स एंड प्राइमरी गुड्स ए दीटा को नेकी ये क्वेश्चन हमको कंफ्यूज करूची बहुत सिंपल क्वेश्चन हम बुझे दउची का भीतर ये कहूची ना गोटे हला एक्सपोर्ट आ गोटे हला इंपोर्ट कौन एक्सपोर्ट इंपोर्ट हबो ना गोटे कहली प्राइमरी गुड्स बा आको हम कहि परबा रॉ मटेरियल आ गोटे हला कोन कहला फिनिश्ड गुड्स एटा कोडी पढैते लास्ट क्लास तो इवोल्यूशन पढौती सेठी डिस्कशन करते इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढेला बेले सेठी डिस्कस करते हला सो मते को एक्सपोर्ट माने इंडिया को कौन एक्सपोर्ट करिया पई चाहुतले इंडिया ब्रिटेन को कौन पठो बोली चाहुतले इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रथमे ब्रिटेन ने हितला तो सेमान को कौन आवश्यक थिला सेमान को आवश्यक थिला रॉ मटेरियल सो सेमाने इंडिया को चाहुतले इंडिया शुड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल केतेरे ना एट चीप कॉस्ट कम टंका रे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करू एवं फिनिश्ड गुड्स किछि नाही नो फिनिश्ड गुड्स इन इंडिया काहे कि ना बिकॉज़ ऑफ deindustrialization is opposite to industrialization एटी इंडिया रे कोन करथले से माने सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन इंडियन इंडस्ट्री को सिस्टमैटिकली डीइंडस्ट्रियलाइज करिया चाहथले बा इंडस्ट्री सेक्टर को इंडिया रे न बढ़िया पई चाहथले इंडस्ट्री सेक्टर को इंडिया रे न बढ़िया पई चाहथले हैला एठी हमें देखले कोन होची ना रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करबा एट चीप कॉस्ट रॉ मटेरियल को इंडिया एक्सपोर्ट करबा एट चीप कॉस्ट एवं एक्कु नेला परे से माने कोन फॉर्मेशन करबे ना फिनिश्ड गुड्स फॉर्मेशन करबे कला परे इंडिया को इंपोर्ट करेबे फिनिश्ड गुड्स केमती ना एट हायर कॉस्ट इंडिया रॉ मटेरियल नै जिवे लो रुपीस रे कम टंका रे ताको प्रोडक्शन करिकि फाइनल गुड्स प्रोडक्शन कला परे इंडिया को हायर कॉस्ट रे पठेबे सो डी इंपोर्ट कोन होची से माने ना इंपोर्ट हमें किछ करने प्राइमरी गुड्स इंपोर्ट करने रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन इंडिया रे रॉ मटेरियल अवेलेबल अछि कोन कहली इंडिया रे रॉ मटेरियल अवेलेबल अछि इंडिया रो रॉ मटेरियल से माने एक्सपोर्ट कर देबे उठी की ब्रिटेन को केते रे ना चीप कॉस्ट रे ताको नि फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन करिवे कला परे पुनी इंडिया को पठेबे केते रे ना एट हायर कॉस्ट बुझेला ताले व्हाट इज द करेक्ट आंसर कोन होबे तुरु समस्त देखि कोन ताले करेक्ट आंसर कोन होबो क्विक समस्त कहतु ए बी सी डी भीतर कौन हम वेरी गुड कौन हम दे वांटेड इंडिया टू बी एन मेक इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स and importer of finished goods. So correct answer is D. Next question को जीवा में what was one of the major contributions of the Britishers to the Indian economy? Major contribution of Britishers to Indian economy. First option, British rule in India saw the construction of several all-weather roads. ऑल वेदर रोड रो अर्थ होची वर्षक 12 मास जो रोड को व्यवहार करि परथिबा सेटाला ऑल वेदर रोड तापर हम देखले कोना ब्रिटिश रूल इन इंडिया सॉ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे नेटवर्क इंडिया रे इंट्रोड्यूस हेतिला इट सॉ डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स इनलैंड ट्रेड एवं सी लेन को डेवलप करता
कौन हम कौन हम समस्ते कहतु ऑल वेदर रोड तो कनेक्शन करि नथिले ताले गोटे जिंस इंट्रोड्यूस होइतला दैट इज रेलवे नेटवर्क ताले व्हाट इज द करेक्ट आंसर ए बी सी डी भितरु करेक्ट आंसर कौन है बी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को which of the following sectors was the major contributor to GDP during British rule in India ब्रिटिश टाइम पीरियड रे माने पूर्वर बिफोर 1947 ये कुछ जीडीपी को कंट्रीब्यूट को सेक्टर अधिक करथला प्राइमरी सेकेंडरी ना टर्शियरी सेक्टर बहुत सिंपल क्वेश्चन इजी क्वेश्चन याको समस्त करि परिबे ये क्वेश्चन समस्त करि परिबे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर ब्रिटिश टाइम पीरियड रे डेवलप होइतला नै इन द लास्ट क्वेश्चन आई डिस्कस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होतला इंडिया रे कोन होतला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन होतला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होतला कोडी इंडिया रे होतला सो सेकेंडरी सेक्टर जदि हमें देखिबा इट वाज नॉट डेवलप्ड नाउ व्हाट अबाउट टर्शियरी सेक्टर एटा मध्ये एग्जिस्ट करू नथिला टर्शियरी सेक्टर भी एठी एग्जिस्ट करू नथिला ताले की एग्जिस्ट करथला ना प्राइमरी सेक्टर एग्जिस्ट करथला सो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कोड आसुथिला प्राइमरी सेक्टर बहुत बढ़िया यदि ये क्वेश्चन को मुझे चेंज कर देबी वर्तमान टाइम पीरियड रे ब्रिटिश टाइम पीरियड न लिखि कहबी करंट टाइम पीरियड रे ताले आंसर कोन हो मते कोंतु वर्तमान टाइम पीरियड रे जदि मु कहबी ताले जीडीपी को कंट्रीब्यूट को सेक्टर करूछ अधिक प्राइमरी ना सेकेंडरी ना टर्शियरी किए करूची ना प्राइमरी ना सेकेंडरी ना टर्शियरी सेक्टर किए करूची बहुत बढ़िया वर्तमान टर्शियरी सेक्टर करूची वेरी गुड ताले सेकेंडरी सेक्टर ता कंट्रीब्यूट न करिवारे हमको असुविधा हो ना हबन हबन तमने सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करूनी इट सीम्स secondary sector the manufacturing sector is not strong in India रे primary ru directly jump to tertiary sector we jump to the tertiary sector secondary sector को हमें importance देने बा manufacturing sector को हमें कौन करते हैं importance देने हाँ कि नहीं manufacturing sector को हमें importance देने ताले यार problem हमको भविष्य रे देखियो को पड़िबो ना पड़िबो यार impact Indian economy ऊपर पड़िबो ना पड़िबो यार impact Indian economy ऊपर पड़िबो ना पड़िबो यस पड़िबो केमती पड़िबो कोन पड़िबो ये सब मु डिस्कस करछि क्लास रे बा आउ केते बळे आगो को हम डिस्कस करबे आ नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा which of the following statement is an accurate description of Indian economy on the eve of independence first point India was a net exporter of capital goods India was a net exporter of primary products India was a net exporter of industrial products India was a net exporter of agricultural goods मैंने सिंपली ये क्वेश्चन पचारिया को चाहूची इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड रे इंडिया को प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करूथला कैपिटल गुड्स ना प्राइमरी प्रोडक्ट्स ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ना एग्रीकल्चरल गुड्स कैपिटल गुड्स प्राइमरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चरल गुड्स कोडा को करूथला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम पाखर नथिला हम एक्सपोर्ट करूथले सॉरी इंपोर्ट करूथले जोत पई इंडिया को कोन कह देउथला इंडिया को देउथला बेगिंग बाउल कंट्री एटा पढैतिली पर लास्ट क्लास रे इंडिया को कोन कह देउथला ना बेगिंग बाउल कंट्री बोली लास्ट क्लास में डिस्कशन करथले सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही हम पाखर नथिला एग्रो प्रोडक्ट अधिक रो अधिक हमें एग्रो प्रोडक्ट अधिक रो अधिक कोन होतला प्रोडक्शन ही हो नथिला इंडिया रे अधिक रु अधिक एग्रो प्रोडक्ट इंडिया रे प्रोडक्शन ही हो नथिला बुझिला कि नहीं ताले करेक्ट आंसर कोन हो कैपिटल गुड्स हम इंपोर्ट करथले कैपिटल गुड्स पे हम पाखरे नथिला गोटिए प्रोडक्ट हम पाखरे अवेलेबल थिला जोटा को हमें फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करथले दैट इज प्राइमरी प्रोडक्ट्स जोगुडा हला कोन ना रॉ मटेरियल
कौन कहली रॉ मटेरियल ताले करेक्ट आंसर कौन हबो व्हाट इज द करेक्ट आंसर यस लिप्स आर गुड प्राइमरी प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया नेक्स्ट जीवा आगो को which of the following statements reflect the condition of agricultural sector in India during British rule British time period रे agriculture sector रो condition कौन थला British time period रे agriculture sector रो condition कौन थला समस्त कोन होइला कहि परियो चारिटा जाक ऑप्शन भलो भाବରେ पढंतु प्रथम चारिटा जाक ऑप्शन पढंतु कोन कहूची agricultural sector experienced huge stagnation and deterioration because of drain of India's wealth agriculture sector experienced huge stagnation and deterioration because of land tenure system last point कहूची because of decline of handicrafts which is more appropriate देखो तीनटा जाक जदि हम देखिबा ठीक लागुची बट मोस्ट एप्रोप्रिएट किया भीतर बिकॉज ऑफ ड्रेन ऑफ इंडिया's wealth ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पढ़िथिले ना हम थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किए लिखिथिले बही बुक वाज रिटन बाय दादा भाई नारोजी हैला so most appropriate answer किए ना A next which of the following is the characteristics of people below poverty line ने जो माने अछंती एटी कोडा ता भीतर characteristics debt trap gender inequality poor health all of these debt trap gender inequality poor health all of these जो माने बिलो द पॉवर्टी लाइन अछंती सेठी हम कोन देखिया पई मिलुची वेरी गुड पॉइंट मानस दादा भाई नारोजी कौन हम एथरू डेट ट्रैप हबो कि नहीं यस बिलो द पॉवर्टी लाइन से माने लोन नियंती लोन सुझी पारंतनी काहे कि ना लोन नै जे से माने एट हायर rate of interest then they are not able to repay the loan repayment करि परिबेनी से माने कोन हबो से माने repayment करि परिबेनी हैला so it leads to debt trap then gender inequality देखियो मिले नहीं काहे कि ना there is a preference for male child there is a preference for male child हैला gender inequality से देखियो मिले poor health कि नहीं yes poor health because low investment on health sector then what is the correct answer ABCD भीतर करेक्ट आंसर कोन हबो बुझे देले बुझेला पर समस्त कहि परिबे डी वेरी गुड लक्ष्मी डी चारिटा तक ऑप्शन एठी करेक्ट मोना करेक्ट ऑप्शन डी ओके पूजारानी करेक्ट प्रियत करेक्ट सोदामिनी करेक्ट डी ताले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ताले which of the following is the main reason behind poor people in India getting limited economic opportunities
lack of skill and basic literacy, scarcity of resource, most of them live in rural India, none of these. तीनटा जाक ऑप्शन देखिए lack of skill and basic literacy. Yes, poor people they cannot invest more on education and health, so it leads to lack of skill and basic literacy. Then is scarcity of resource. India रे अछि कि नहीं? Yes. So per capita resource availability is low in India. Per capita resource availability मु पढ़ैतिली total resource divided by population, total population, per capita resource availability. Then is most of them live in rural India. Yes, most of them they live in rural India. Rural India rahile problem kon हुए ना, it lacks industrialization. Industrialization rate is low. Rate of industrialization is low. So most of them एटी kon कहला they live in rural India. ହେଲା इंडस्ट्रियलाइजेशन लो हेले अपॉर्चुनिटी इठी लो होई जो कोन हो अपॉर्चुनिटी इठी लो होई जो तीनटा जाक त हमको देखिया को मिलुची बट मोस्ट एप्रोप्रिएट जदि हम देखिया लैक ऑफ स्किल एंड बेसिक लिटरेसी जदि एटा नॉन ऑफ दिस न देई कि दबो ऑल ऑफ दिस जदि एटा नॉन ऑफ दिस न देई कि दबो ऑल ऑफ दिस ताहले आंसर कोन ही जो नॉन ऑफ दिस जदि दिए ताहले आंसर कोन हो नॉन ऑफ दिस देले आंसर हो ए none of these dele answer hobo A kahingi because of lack of skill and basic literacy rate poor people they are getting limited economic opportunities. ହେଲା ଯଦି all of this ଦେଇଯିଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଯଦି all of this ଦେଇଯିए ତାହେଲେ କଣ ହବ all of this जदि दिए ताहले D हबो कि नहीं all of this जदि दिए ताहले D हबो कि नहीं yes ताहले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 2011-12 रे को स्टेट रे हमको हाईएस्ट रेट ऑफ पॉवर्टी देखा मिलता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इन 2011-12 जोटे हमको हाईएस्ट पॉवर्टी रेट देखा मिलता वेस्ट बंगाल बिहार ओडिशा मध्य प्रदेश कौन कहली वेस्ट बंगाल बिहार ओडिशा मध्य प्रदेश एटा समस्त जानिथिबे आंसर कोन What is the correct answer? कौन हम सबुठ अधिक कोड देखा मिलता ये टाइम पीरियड ना ओडिशा रे पॉवर्टी रेट टा ओडिशा रे बहुत हाई रेट ऑफ पॉवर्टी हैला क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज पावरलेसनेस लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रीडम लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रीडम पावरलेसनेस रो अर्थ कोन यार अर्थ होची ऑन एम्पावरमेंट कौन कहले यार अर्थ ना यार अर्थ होची ऑन एम्पावरमेंट एठी कौन कहली ना लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रीडम lack of representation and lack of freedom. So this is about voice, raising their voice, or this is about freedom, or this is about empowerment, or it is about empowerment. Tale ko condition habo? What is the correct answer? Which of the following is correct? Condition कौन ना condition होची poverty. कौन कहले हमें poverty is the condition of powerlessness. Poverty is the condition of powerlessness. Clear ना doubt होची
नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा। अच्छा आउ केतरा क्वेश्चन करबा हमें ता पूर्व किछटा कांसेप्ट डिस्कस करछि तापर पुनी हमें क्वेश्चन को आसीबा। अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड क्वेश्चन ऑन इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चन अछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि के ये सब क्वेश्चन मु डिस्कस करबी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि यहाँ पर हम डिस्कस करबा तापर पूर्व केतटा कांसेप्ट को आसुछि कांसेप्ट को रिविजिट करबा देन विल कम बैक टू अगेन एमसीक्यूज। फर्स्ट हम देखियो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एटा बुझिया पय हेले हमको बुझिया दरकार प्लानिंग कहले हमें कोन बुझिछे हमें देखिथिले ह्यूमन वांट ऊपर हमें पढिथिले ह्यूमन वांट टा लिमिटेड थिला ना अनलिमिटेड थिला ह्यूमन वांट टा लिमिटेड एंड अनलिमिटेड थिला कोन थिला ना ह्यूमन वांट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट टा लिमिटेड ना अनलिमिटेड एटा अनलिमिटेड थिला एको सैटिस्फाई जे करथिला कोन ना रिसोर्स ए रिसोर्स टा लिमिटेड ना अनलिमिटेड ना रिसोर्स टा होची लिमिटेड ताले हम कोन करिया पड़छि ना टू सैटिस्फाई दिस अनलिमिटेड ह्यूमन वांट बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स कोन करिया पड़छि हमको टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स आको अचीव करिया पई टू अचीव दिस डिजायर्ड गोल हमको कोन दरकार ना रिसोर्स दरकार एवं ए रिसोर्स होची लिमिटेड सो प्लानिंग रे बेसिकली कोन हुए ना प्लानिंग रे हमें ये जो लिमिटेड रिसोर्स अछि तार प्रॉपर एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करू कोन करू कहली तार प्रॉपर एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुए allocation and distribution of resource हमें पूछे कोडी ना इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सो प्लानिंग रे कोन होचे एग्जैक्टली ना allocation and distribution of resources सो प्लानिंग इज सिंपली अ प्रोसेस जोटी हमें किछ इनपुट नउचे एवं ताको प्रोसेस करूचे यार डिफाइंड गोल अछि गोटे पर्टिकुलर जगह रे पहुंचो को चाहूची एवं जतिक रिसोर्स अछि तार ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूची कोन करूची कहली या पाखरे जतिक रिसोर्स अछि ये से रिसोर्स रो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूची हैला सो प्लानिंग हमको काहे की दरकार इट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म रे इंपोर्टेंस कहार रहे ना इंपोर्टेंस रहे प्राइवेट सेक्टर कहार ना इंपोर्टेंस रहे प्राइवेट सेक्टर ये कुछ प्राइवेट सेक्टर को अननेसेसरी इंपोर्टेंस न दे प्राइवेट सेक्टर को अननेसेसरी इंपोर्टेंस न दे कि गवर्नमेंट भी एटी इंटरफेयर करिवो एंड इट विल फॉर द कहा पे सिटीजन प्राइवेट सेक्टर इंपोर्टेंस दे कहा को ना टू द कस्टमर गवर्नमेंट कहा को इंपोर्टेंस दे ना गवर्नमेंट दबो टू द सिटीजन ये कुछ सिटीजन ऊपर इंपोर्टेंस दवा पाई देन आउ कोन दरकार हमको ना देयर इज अ नीड फॉर सोशल जस्टिस कोन दरकार हमको ना देयर इज अ नीड फॉर सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश करिया पई सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश करिया पई हमको एम्पावरमेंट रा आवश्यकता रही छी बा प्लानिंग रा आवश्यकता रही छी देन इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन माने को सेक्टर को केते रिसोर्स जीवा मेटी दे कोन देखुचे को सेक्टर को केते रिसोर्स जीवो सो इंडियन प्लानिंग रा हमें फीचर्स देखिबा ये होची इंडिकेटिव टाइप ऑफ प्लानिंग मोस्ट इंपोर्टेंट एटी बारंबार क्वेश्चन आसे इंडियन प्लानिंग इज इंडिकेटिव और इंपरेटिव इंडियन प्लानिंग इज इंडिकेटिव और इंपरेटिव एटी कोन हुए इंडिकेटिव प्लानिंग रे जहां टारगेट अछि दिस टारगेट्स दे आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर सेक्टर्स ओवर व्हिच इट हैज नो कंट्रोल जो सेक्टर ऊपर गवर्नमेंट रो कंट्रोल नहीं सिटी टारगेट फिक्स करिवो कि ना गवर्नमेंट नाउ वेदर इट इज कंप्लीटली इकोनॉमिक और नॉट द आंसर इज नो इट इज नॉट कंप्लीटली इकोनॉमिक एटी कोन होची ना इट इज सोशल प्लानिंग कोन होची एटी ना दिस इज द टाइप ऑफ सोशल प्लानिंग रे हम कोन देखुचे सोशल प्लानिंग रे कोन होची सोशल प्लानिंग रे एटी बेनिफिट कोन होची ना दिस इज देखो एटी ये जो प्लानिंग हो आपको को मान ये प्लान फॉर्मुलेट करेंगे ना दिस इज फॉर्मुलेटेड बाय पॉलिटिशियन जेहेतु पॉलिटिशियन माने आपको फॉर्मुलेट करिवे दे हैव टू बी आंसरेबल टू द पब्लिक दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक को समान आंसरेबल हां कि नहीं बिकॉज़ इन द नेक्स्ट इलेक्शन जेतो समान आसीबे वोट पई पब्लिक क्वेश्चन करियो कोन करियो पब्लिक क्वेश्चन करियो नेक्स्ट इलेक्शन में वोट पई आसी हला सो कंप्लीटली जदि हम देखिबा दे आर नॉट कंप्लीटली इकोनॉमिक रादर दे आर ये गोटे सोशल टाइप ऑफ प्लानिंग एज वेल देन एटी जो डाटा हमको मिलचे को टाइप रो डाटा ना दिस इज अनरिलायबल डाटा काहे कि ना ऑथेंटिकेट डाटा नहीं हम पाखे ऑथेंटिकेट डाटा हमको मिल पार यदि ऑथेंटिकेट डाटा न हुए ताले प्लानिंग प्रोसेस टा एंटायर प्रोसेस ऊपर हैम्पर करिवो एंटायर प्रोसेस ऊपर इंपैक्ट पड़िवो नेगेटिव इंपैक्ट पड़िवो देन इज फिजिकल प्लानिंग कोन ना एटा जोटा फाइनेंशियल प्लानिंग नुहे दिस इज फॉर फिजिकल प्लानिंग कोन हम देखिबा आगो यार डेफिनेशन और डिस्कशन अछि आ
ठीक आसीबा हां इंडियन प्लानिंग टा मोइटी कहली कोन इट इज सोशल व्हाई सोशल इट इज फॉर्मुलेटेड बाय पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिशियंस दे फोकस ऑन सोसाइटी काहे कि जेहेतु पॉलिटिक्स करछंती तांकर ऑब्जेक्टिव का पर सबले ना मेजॉरिटी का पर ना मेजॉरिटी ऑफ पीपल on majority of people or majority of public. So when it focuses on poor section, then it is good for the society. When it focuses on the capitalist section, then this is bad for the society. Capitalist section माने see प्रो पोर आउ आंटी रिच ये दीटा जाक सेम कथा नुहे प्रो पोर आउ आंटी रिच बा प्रो रिच आंटी पोर दीटा जाक सेम कथा नुहे many a times opposition raise this question that the government is pro capitalist it never means this is against socialism दीटा जाकर इंपोर्टेंस अछि इकोनॉमी रे हमको प्राइवेट सेक्टर भी दरकार एवं गवर्नमेंट सेक्टर भी दरकार की कहली ना हमको गवर्नमेंट सेक्टर भी दरकार एवं हमको प्राइवेट सेक्टर भी दरकार दी जण एटी एग्जिस्ट करिया दरकार प्राइवेट सेक्टर न रहिले प्रोडक्शन हबनी प्रॉपर प्रोडक्शन हबनी प्रोडक्शन न हेले डिमांड अनुसार सप्लाई ही परिबनी सप्लाई न हेले इन्फ्लेशन बढ़िबो प्राइवेट सेक्टर आउ कोन करछि ना प्राइवेट सेक्टर हमको एम्प्लॉयमेंट दोछि मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ुछि प्राइवेट सेक्टर सो प्राइवेट सेक्टर दरकार एवं गवर्नमेंट कोन करिया दरकार ना गवर्नमेंट रेगुलेट करू सब जिंस एवरीथिंग टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एवरीथिंग इज टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एवं एटी प्राइवेट सेक्टर कोन करछि ना सप्लाई करछि एवं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करछि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाउछि बुझिला क्लियर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करछि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाउछि अनरिलायबल डाटा ऊपर डिस्कशन कली ऑथेंटिकेट डाटा आवश्यकता रही सो प्लानिंग रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन ना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होछि इकोनॉमिक ग्रोथ कोन दरकार ना हमको इकोनॉमिक ग्रोथ दरकार इकोनॉमिक ग्रोथ रे जदि हम देखिबा फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन ना जीडीपी इंक्रीज होवा दरकार ना टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होवा दरकार जीडीपी बा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होवा दरकार देन इज सेल्फ रिलायंस माने ये कहां ऊपर रिलाय करबो ना निज ऊपर निजे रिलाय करबा दरकार सो जेमते हम देखिले इंडिया को बेगिंग बाउल रो टैग मिलुथिला जेते हम फॉरेन कंट्री रो अधिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूथिले कोन ना फूड ग्रेन हम पाखरे सेति की फूड ग्रेन्स नथिला हमें कोन करथिला फॉरेन कंट्री से गुडा सब इंपोर्ट करथिले जेहेतु इंपोर्ट करथिले आको कोहा गला कोन ना बेगिंग बाउल कंट्री सो सेल्फ रिलायंस रो अर्थ होची हमें आम ऊपर डिपेंडेंट हवा एवं प्रोडक्शन अधिक करिया then is removal of unemployment अब कौन कहली removal of unemployment को remove करिया मध्य one of the objective of planning unemployment remove हेले कोन हबो employment बढ़िबो मतलब हम देखियो standard of living टा एठी कोन हबो ना increase हबो कोन increase हबो standard of living एठी increase हबो clear standard of living केमती increase होउची ना काहा को डाउट अछि बुझी होउची कि नहीं ये सबूर डिटेल डिस्कशन ए रिलेटेड मेंस रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन एडिटोरियल एनालिसिस और मैगजीन एनालिसिस रहउची से क्लास तो से क्लास को समस्त अटेंड करिवे इट इज अवेलेबल प्रत्येक संडे इटा अपलोड होउची लास्ट वीक रे मु कहितली अपलोड हेछि बोली समस्त करिचन से क्लास एनीवन हु मिस्ड सौदामिनी करिच बहुत बढ़िया सिखिला सेतुर किछि 6 टा इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर मु डिस्कस करथली मेंस एंगल 6 टा इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कस करथली मेंस एंगल तो 6 टा 10 टा टॉपिक रहइबो प्रत्येक वीक रे सो गोटे मासरे आमे पाखा पाखी 25 टू 30 टॉपिक डिस्कस करिवा मिनिमम 25 टॉपिक डिस्कस हो माने गोटे वर्ष रे 300 टॉपिक इन 1 ईयर 300 टॉपिक क्वेश्चन केतेटा आसुची के हमर मेंस पेपर 1 2 3 4 सबुटी यूटिलाइज करबे तक कोठी कहली पेपर 1 2 3 4 सबुटी तक यूटिलाइज करबे सौदामिनी करिच मोना करिच लक्ष्मी यस अन्य माने अदर्स मेनी स्टूडेंट्स अन्य माने करिसंती ना नहीं जो माने करि नाहंती ताको समस्त करिवे एटी प्लेलिस्ट रे सर्च कर देबे बा सर्च कर देबे एडिटोरियल एनालिसिस सिंपली जदी YouTube रे सर्च करिवे PWOPSC एडिटोरियल एति PWOPSC एडिटोरियल ताल से क्लास आसी जो पास से क्लास को समस्त करिवे ताको प्रैक्टिस करिवे तार क्वेश्चन आंसर जहा देछि सेठी क्वेश्चन भी देछि मेंस पई से क्वेश्चन मेंस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिवे एवं तार नोट्स करिवे जो माने रिगरसली ओपीएससी पई पढुचन ओएस परीक्षा पई जो माने पढुचंती बा पाइया पई चाहउछन क्लियर बुझी पारले समझते लिप्सा करिनो लिप्सा जदी न करछ करि दो सेटा बहुत इंपोर्टेंट क्लास हेल्प करिवो से मेंस पई चल आगु जीवा पहले सेल्फ रिलायंस देखले रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखले
देन आउ ये कोन करछि ना रिडक्शन इन इनइक्वालिटी इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करछि कोन कहली ना इट रिड्यूसेस इनकम इनइक्वालिटी आउ कोन करछि ना एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी कोन करछि ये ना पॉवर्टी एलिमिनेट करूछि प्लानिंग तार ऑब्जेक्टिव होछि पॉवर्टी एलिमिनेट करबा अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिक्रीज करबा बाय एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज को इंक्रीज करबा सो दीज आर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग सो इंडिया रे हमें प्लानिंग रो हिस्ट्री को जीवा फर्स्ट होछि विश्वेश्वराय प्लान विश्वेश्वराय एम विश्वेश्वराय फॉर द फर्स्ट टाइम ही प्रपोज द ब्लूप्रिंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इंडिया रे को टाइप रो प्लानिंग हो दरकार फर्स्ट टाइम पे से ही प्रपोजल देथिले गोटे बुक लिखिले जो बुक रो नाम होछि द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 रे गोटे बुक लिखिले जार नाम होछि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया and he advocated for democratic capitalism रहो private sector रहो but with a focus on poor people कहाँ पर फोकस करिकि ना poor मानक ऊपर फोकस करिकि रहो then the FICCI proposal ये कहाँ पर फोकस करछि ना एटा होछि FICCI ର फुल फॉर्म कोन ना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इट क्वेश्चन मार्केट इकोनॉमी कोन कहली ये कहाँ पर क्वेश्चन करछि कहाँ पर इंपैक्ट पकोछि ना इट क्वेश्चन मार्केट इकोनॉमी कोन हम ऑलरेडी डिस्कस करि साचे प्राइवेट सेक्टर सो यदि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये कौन करछि यदि ये प्लान फॉर्मुलेट करछि ये ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर ऊपर फोकस करियो ऑब्वियसली कहाँ पर फोकस करियो प्राइवेट सेक्टर ऊपर करियो सो इट एडवोकेटेड फॉर स्टेट रन इकोनॉमी कहाँ पर इट एडवोकेटेड फॉर स्टेट रन इकोनॉमी then the next is Gandhian plan was proposed by Subhash Bose 1938 re national planning committee was established under Jawaharlal Nehru it created many committees for planning then next हमें देखिबा next होची Gandhian plan ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना इथरे गोटे कमिटी थिला जार ना होची पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी कोन कहली पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी ये जून 1941 रे एस्टैब्लिश हरा यार ऑब्जेक्टिव कोन ना वर्ल्ड वार परे जहाँ सब डिवास्टेशन हेची बा डिस्ट्रक्शन हेची बा नेगेटिव इंपैक्ट पड़े इकोनॉमी पर ये सब गुडा को रिवैम्प करिया पई कहला रिवाइटलाइज करिया पई कहला है ना सो यार ऑब्जेक्टिव होची रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर वर्ल्ड वार नेक्स्ट देयर इज अनदर कमिटी नोन एज कंसल्टेटिव कमिटी ये कहां अंडर थिला 1941 इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर रामास्वामी मुदालियर यार ऑब्जेक्टिव कोन ना टू एडवाइज पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी कोन कहली यार ऑब्जेक्टिव ना टू एडवाइज द पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी को ये एडवाइज करे देन एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड गोटे रहिला जहार काम होची इट विल रिव्यू प्लानिंग व्हिच इज डन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कोन करिवो ना व्हिच इज रिव्यू प्लानिंग डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट तापर असला बॉम्बे प्लान नो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन ना टू रिसेप प्लानिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये कहला कि एग्रारियन रिस्ट्रक्चरिंग जमींदारी सिस्टम को अबोलिश कर दियो मिनिमम वेज प्रोवाइड करो को मान को ना जो माने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर ये सब कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव रखला एंड स्पेसिफिकली ये चाहिला एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करिया पई को सेक्टर को ना एग्रीकल्चर सेक्टर को ये फोकस कला अधिक या सहित बॉम्बे प्लान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऊपर मध्ये फोकस कला लाइक हेवी गुड्स एवं बेसिक इंडस्ट्री को डेवलप करिया पई कहला का को हेवी गुड्स एंड बेसिक इंडस्ट्री हला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हेले इट आसे को सेक्टर अंडर है सेकेंडरी सेक्टर कोतरे आसु जे सेकेंडरी सेक्टर एग्रीकल्चर ता कोतरे आसले ना प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर कोतरे आसला ना प्राइमरी सेक्टर एटा कोतरे आसला ना सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर तो नथिला हम पाखरे सो ऑब्जेक्टिव कोन रहइबो ना ऑब्जेक्टिव रहइबो ए दीटा सेक्टर को डेवलप करियो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी then development of essential consumer goods है so consumer goods को डेवलप करिया पई ये चेष्टा कला so that डिमांड अनुसार सप्लाई हेबो मार्केट रे डिमांड अनुसार एटी सप्लाई रहइबो then emphasis on small medium scale and cottage industry कहां परे small medium scale and cottage industry ये ताको एम्फासिस देबा पई कहूची ता प्रोत्साहन करिया पई कहूची देन स्टेट रो रोल को इंक्रीज करिया पई कहूची बाद देखिए हम देखियो ये कहां पर फोकस करची ना सोशलिज्म कहां पर फोकस करची ना सोशलिज्म बाल जहां को हम कहूचे कोन लार्ज स्केल सोशल वेलफेयर कोन कहूता कमे लार्ज स्केल सोशल वेलफेयर देन टू रिमूव ग्रॉस इनइक्वालिटी कोन करिया पई कहूची ना टू रिमूव ग्रॉस इनइक्वालिटी जो इनइक्वालिटी हमको देखिया मिलुची पोर और रिच भितरे ये ताकू मध्ये रिमूव करिया पई कहूची
सो होलिस्टिकली जदि हम देखिए द प्लान्स प्रपोज्ड इन बॉम्बे प्लान इट focused on improvement, holistic improvement in the society, primary sector, secondary sector, income inequality, ये सब जिनस ऊपर ये फोकस कला बुझिला। तापर आउ किछि मॉडल देखिबा हरुद दोमार स्ट्रेटजी। हरुद दोमार स्ट्रेटजी एटी क्वेश्चन आसीबो को प्लान एटा इंप्लीमेंट हेतला। इट वाज इंप्लीमेंटेड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो ये स्ट्रेटजी एम्फासिस कला कहा पर द रोल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन, कहा पर फोकस कला ना ऑन द रोल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन प्लस नेशनल इनकम को इंक्रीज करिया पई एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज करिया पई। सो दीटा साइड डिमांड साइड को ये बढ़िया पई कहूची एंड सप्लाई साइड को मध्य बढ़िया पई कहूची। प्रोडक्शन भी बढ़ा हैला, डिमांड को भी बढ़ा। सो नेशनल इनकम इंक्रीज हबो, नेशनल इनकम इंक्रीज हबो एंड पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हबो। ये ला हरुद दोमार स्ट्रेटजी। तापर नेहरू मालवीय स्ट्रेटजी, ये कांसेप्ट को हम एंटले कोटना रशिया रो आनिथिले। पॉलिटी रे समस्त पढिथिबे यदि प्लानिंग टाको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्लानिंग फ्रॉम व्हिच कंट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जो प्लानिंग पोर्शन अछि सेटा को हम कोड बोरो करछो, इट वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री, कोड बोरो करथिला यूएसएसआर रो कि नहीं, समस्त जानथिबे एटा यूएसएसआर रो कि नहीं। सो नेहरू मालवीय स्ट्रेटजी ता रशियन एक्सपीरियंस रो आसी। So this strategy was based on two sector model, गोटेला consumer goods and capital goods। ये कोची दीटा जाक को हमें दीटा जाक को हमें फोकस करिया, गोटेला consumer goods sector आ गोटेला capital goods sector हैला। consumer goods and capital goods sector को ये फोकस करूची। Then the next is this strategy emphasize investment in heavy industry। heavy industry investment कले हमको benefit कौन हुए ना, we can achieve industrialization। कौन करि परिबा एटी ना, we can achieve industrialization। इंडस्ट्रियलाइजेशन एटी अधिक रु अधिक होई परिबो जदि हम हेवी इंडस्ट्री को फोकस करछे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हेले कोन वे ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो रेट इंक्रीज करिवो, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोन हबो, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो यार ऑब्जेक्टिव कोन, यार ऑब्जेक्टिव होउची इंडिया को गोटे सेल्फ रिलिएंट इकोनॉमी रे परिवर्तन करिबा एवं कैपिटल कंस्ट्रेंट जहा अछि से कैपिटल कंस्ट्रेंट गुडा सब ओवरकम करिया। सो ये स्ट्रेटजी केबे अडॉप्ट होला ना, दिस स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड इन द सेकंड 5 ईयर प्लान। It was adopted in second 5-year plan. So there are certain minor modifications. There are certain minor modifications in it. So it was basically Nehru Malviya strategy. It was basically a long-term plan. It was a long-term strategy. है ना, बुझे लगे नहीं ये पर्यंत? Any doubt? गांधीयन स्ट्रेटेजी रे हम कहां पर फोकस करले ना, इट वाज ये याको प्रपोज की करले, प्रपोज्ड बाय आचार्य एस.एन. अग्रवाल। इंपोर्टेंट एटी सबले आसे गांधीयन स्ट्रेटेजी के प्रपोज करथिले। सो आउ किछि कोई आंसर लिखि के आसन समस्त लिख दे आसन महात्मा गांधी, बट करेक्ट आंसर इज आचार्य एस.एन. अग्रवाल गांधीयन प्लान प्रपोज करथिले इन द ईयर 1944। सो ये कहां पर एटी फोकस करले ना, ये कहले साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रो साइंटिफिक डेवलपमेंट। आउ कोन ना रैपिड ग्रोथ ऑफ कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, कार डेवलपमेंट हबो ना विलेज आउ कॉटेज इंडस्ट्री एगुडा को डेवलप करिया पई कहले। केना रूरल डेवलपमेंट आउची बेसिक ऑब्जेक्टिव गांधीयन प्लान। तापर आसला एलपीजी मॉडल। नाउ एलपीजी मॉडल इज इंपोर्टेंट फॉर अस। एलपीजी मॉडल हम केबे अडॉप्ट कले ना, एटा को अडॉप्ट कले हम 1991 रे। 1991 रे कोन आसला ना, आसला एलपीजी मॉडल। यार फुल फॉर्म कोन ना, यार फुल फॉर्म होची लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये कहा समय आसिला सेतोले प्राइम मिनिस्टर थिले पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर थिले के ना डॉक्टर मनमोहन सिंह। सेति पय याको कोन कहै ना, दिस इज नोन एज राव सिंह, कोन कहै याको सेति पय कहै छै राव सिंह मॉडल। एलपीजी मॉडल ना कोन मन रखे, राव सिंह मॉडल। सो एथिरे एग्जैक्टली कोन होची एलपीजी रे, कोन होची हम फोकस कहा पर कहूची एलपीजी रे ना, हमें ग्लोबलाइजेशन ऊपर फोकस करछे। कहा पर ना, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन नो अर्थ कोन, ग्लोबलाइजेशन अर्थ होची ट्रीटिंग एंटायर ग्लोब एज अ सिंगल मार्केट, ट्रीटिंग एंटायर ग्लोब एज अ
सिंगल मार्केट ताको हम कोन कहउते ना ताको हम ग्लोबलाइजेशन बोली कहउते सो ग्लोबलाइजेशन करिया पई हेले हमको आउ दीटा पॉइंट ऊपर मध्ये फोकस करिया पड़िबो दैट इज प्राइवेटाइजेशन एंड कोन कहली गोटेला प्राइवेटाइजेशन एंड अनदर वन इज योर लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन ने हम इकोनॉमी टा को लिबरल करूचे बा ओपन करूचे लिबरल करूचे माने अननेसेसरी कांस्टेंट हटौचे सब कोन कहते एठी ना अननेसेसरी कांस्टेंट गुडा को लिबरलाइजेशन हम हटै देछु जेमति कि लाइसेंस राज प्राइवेटाइजेशन ने कोन करछ ना मार्केट को ओपन करछ फॉर द प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट रो रोल टाको हम रिड्यूस कर दोछे गवर्नमेंट रो रोल को हम एटी कोन करछे ना रिड्यूस करछे रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रोल हैला याको कोन कहला हमें याको कहला हमें प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सो एटी रेड टैपिज्म इज कन्वर्टेड टू रेड कार्पेट रेड टैपिज्म रो अर्थ होउची टू मच ऑफ ऑफिशियल और bureaucratic functions too much of official or bureaucratic functions red carpet कहले कोन होची एठी बुझुचे ना here we welcome red carpet रे हम कोन करछ ना here we welcome socio economic development here we welcome socio economic development ako हम welcome करछ हैला so red tapism रो हमको कोन दरकार ना we need red carpet हैला कौन एटा लिखिजा खान सर को जेल होएगा क्या हम स्टूडेंट्स का क्या होगा you what happened exactly I didn't receive this message not able to understand एटा कौन कहबा के चाहछ एनी न्यूज़ किछ अपडेट आसे किछ न्यूज़ अछि क्या ऊपर आई एम ऑन अवर हैला सो प्लानिंग रा कांसेप्ट ता कोड ओरिजिनेट हला बा कोड बढ़िला जदि हम देखिबा ना प्रथम रीजनल प्लानिंग रा कांसेप्ट आसला यूएसए रे केबे ना 1916 में सो गोटे प्रोजेक्ट आसला जा कहते टीवीसी टेनिस वैली प्रोजेक्ट यार ऑब्जेक्टिव रहला कोन ना फ्लड कंट्रोल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉरेस्ट्री टाउन प्लानिंग हैला फॉरेस्ट्री टाउन प्लानिंग ये सब रहिला देन इंडिया रे मध्ये सेम कांसेप्ट को हम अप्लाई करले केबे ना इन 1948 का थ्रू ना थ्रू डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन तापर 1966 रे असला कोन ना वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट 1966 रे कोन असला ना वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट okay incidents 3 students died yes see एठी ए न्यूज जदि हम देखिबा दिस इज अ वेरी ह्यूज मार्केट दिल्ली इज अ वेरी ह्यूज मार्केट एंड जीडीपी जदि हम देखिबा बिकॉज ऑफ आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मैक्सिमम ए जोन ने बहुत अधिक प्रोडक्शन जदि हम देखिबा आइते सर्विस सेक्टर लेड प्रोडक्शन सो when fees charged by coaching institutes is so much or at a very high amount simultaneously it comes the question of responsibility and accountability now India रे जदि हम देखिबा the most powerful thing is human life article 21 of the Indian constitution this is the most powerful article right to life now when your right to life is in danger then what so may ever be the organization or institution is government action is required strong government action is required strong government interference is required okay nahi so safety first unhealthy unhygienic বা unsustainable condition ne unsustainable condition ne पाठ पढ़ाइबाटा it is not accepted it is never acceptable because students जो माने those who are dead गवर्नमेंट पढ़िबा सेपरेट कथा गवर्नमेंट टी कोन अछि गवर्नमेंट पढ़ो बट देयर इज अ रूल लॉ एंड रेगुलेशन जदि हम प्रॉपर्ली ताकू मानुचे ताहले की भी पढ़ले किछ असुविधा नहीं nothing to worry about government is not most powerful is there is a judiciary or judicial system again it a judicial system to बुझिबो let it be examined it examine how भूल कहार अछि ठीक कहार अछि then accordingly they will be punished if they adhere to all the protocols all the safety measures and standards ताहले किछ असुविधा नहीं but
without following proper safety measures or safety standards student जो माने पाठ पढ़िया पई जाइचंती केते स्वप्न नै कि पाठ पढ़िबो आईएएस ऑफिसर होबो सेमानकर डेथ इट इज नेवर एक्सेप्टेड इन द इंडियन सोसाइटी so it is all about responsibility and accountability this is all about responsibility and accountability ये रिलेटेड किसी स्ट्रांग लॉ आसवा दरकार फॉर रेगुलेशन माय पर्सनल व्यू एनीवे कमिंग बैक टू डिस्कशन एटा में देखिले इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे फर्स्ट टाइम पे रीजनल प्लानिंग कोड आसला ना रीजनल प्लानिंग यूएस रे 1916 रे देन दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 1948 रे इंडिया अडॉप्ट कला वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट आसला घाना रे 1966 रे सो ए कांसेप्ट हमें कोड आनिचे पढितले ना यूएसएसआर रो आनितले बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आनिला ओरिजिन कोड ना 1917 रे यूएसएसआर रो हमें आनिले 1928 रे फॉर द फर्स्ट टाइम स्टालिन अनाउंस्ड इकोनॉमिक प्लानिंग एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान यूएसएसआर रे आसला केबे ना 1928 रू 33 हैला सो ये जो प्लान देखो ये प्लानिंग को कौन कहा जाए दिस नेचर इज नोन एज गॉस प्लान अपन में कौन कहूजे दिस इज नोन एज गॉस प्लान मन रखबे इंपोर्टेंट सो फर्स्ट सोवियत प्लान को कहा जाए गॉस प्लान बोली एटी हेवी इंडस्ट्री को फोकस करा जायतिला ओवर लाइट इंडस्ट्री को कम इंपोर्टेंस हेवी इंडस्ट्री को अधिक इंपोर्टेंस दिया जायतिला कंज्यूमर गुड्स दे वर गिवन लेस इंपोर्टेंस इंडिया अडॉप्टेड द सेम प्रोसेस इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान रे इंडिया मध्ये सेम टाइप ऑफ प्रोसेस को अडॉप्ट करथिला एई पर्यंत समस्त बुझिले ना काहा को डाउट अछि क्लियर समस्त क्लियर तापर हमें आसीबा इकोनॉमिक सिस्टम ऊपर डिपेंड करिकि प्लानिंग को दुई भाग रे डिवाइड करा जाय गोटेला इंपरेटिव प्लानिंग आ गोटेला इंडिकेटिव प्लानिंग कौन कहली इंपरेटिव प्लानिंग एंड इंडिकेटिव प्लानिंग इंपरेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग इंपरेटिव प्लानिंग को टाइप रो कंट्री फॉलो करंती ना जो गुडा को स्टेट रन इकोनॉमी जाको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोली कहा जाए बा कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोली कहा जाए कोन सोशलिस्ट बा कम्युनिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट रे कोन वे ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू द स्टेट एक्सेप्ट लेबर एटा यूएसएसआर हमको सोशलिज्म देखिया को मिले बा सोशलिस्टिक प्लानिंग देखिया पे मिले नाउ कम्युनिस्टिक प्लानिंग रे कोन वे ना ऑल द रिसोर्सेस इंक्लूडिंग लेबर all the resources including labor they belong to the government ये सब गुडा को एठी गवर्नमेंट को बिलोंग करे हला इंक्लूडिंग लेबर एवरीथिंग बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट येला इंपरेटिव प्लानिंग और इंडिकेटिव प्लानिंग का कथा ताले इंपरेटिव प्लानिंग रो ऑब्जेक्टिव कोन एठी क्वांटिटेटिव टारगेट थाए पर कैपिटा इनकम एते के होबा दरकार रेलवे नेटवर्क एते के होबा दरकार एठी ये प्लान गुडा को मध्ये प्रॉपर्ली अचीव हो जाए काहे कि नहीं सब रिसोर्स कहा पाकर थाए नहीं सब रिसोर्स स्टेट पाकर थाए प्राइवेट सेक्टर एठी एग्जिस्टिंग करे here private sector doesn't exist there is no private participation then what is the role of market na no role of the market ro kichi role nahi यदि private sector practicing करूनी private sector existing करूनी so there is no requirement of the market force रे रहबार मध्ये किछि आवश्यकता नै so imperative planning एटी किया को फॉलो करूची मु कहली ना एटी कमांड इकोनॉमी माने कि ना स्टेट रन इकोनॉमी जो कि सब पावर का पाकर स्टेट पाकर एग्जांपल लाइक यूएसएसआर चाइना पोलैंड हंगेरी ऑस्ट्रिया रोमानिया ए टाइप रो कंट्री हैला सो जेतबेले वर्ल्ड वार हैला ड्यूरिंग वर्ल्ड वार ईस्ट साइड रू बा जोठी कमांड इकोनॉमी प्लानिंग होतला सेटू इकोनॉमिस्ट माने माइग्रेट कले वेस्ट कंट्री गुडा को बा जोठी कैपिटलिज्म प्रैक्टिस होतला से माने कैपिटलिज्म को देखिला परे कैपिटलिज्म रो कांसेप्ट और थीम को फिलोसफी को बुझिला परे दे केम बैक टू देयर ओन कंट्री एंड दे ट्राई टू इंप्लीमेंट द सेम ताकसन इंप्लीमेंट करिया पे लागले तांको कंट्री ताकसन इंप्लीमेंट करिया पे लागले but in their countries their ideas was completely outrightly rejected जेमति कि यदि हम देखिए ऑस्कार लेंस ले जने पोलिश इकोनॉमिस्ट he talked about market socialism and his idea was rejected his idea was cancelled so world war 2 परे जेतेबेले से माने ऑलरेडी डिस्कस करली वर्ल्ड वार 2 पर when they came back to their own country से माने कैपिटलिज्म को ताका कंट्री इंप्लीमेंट करिया पे चाहे गोटे सिंपल कांसेप्ट कहूची देखो वर्ल्ड को इकोनॉमी अनुसार मध्ये दुई भाग रे डिवाइड कर दे एटाला ईस्ट साइड
एठी बेसिकली सोशलिज्म प्रैक्टिस हुए सोशलिस्टिक कंट्री एपटे जो मान रहिले एमाने कोन ना एमाने होतनी कैपिटलिस्टिक कंट्री एमाने प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्टेंस देंती एमाने गवर्नमेंट सेक्टर को इंपोर्टेंस देंती एमाने एपटे लीडिंग कंट्री हले किए लीडिंग कंट्री हले चाइना एवं रशिया जोटा हमर यूएसएसआर को करथला एपटे लीडिंग कंट्री किए ना यूएसए यूके एमाने हले लीडिंग कंट्री वेस्ट सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट इकोनॉमिक डिफरेंस हमको एटा वेस्ट और ईस्ट भीतर देखिया पे मिलता है बुझेला नहीं का डाउट अछि पर्यंत एनी डाउट ताले आउ किछि क्वेश्चन को आसीबा आउ किछि क्वेश्चन को आसीबा दिस क्वेश्चन इज ऑन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ऊपर गोटे क्वेश्चन करबा इन्फ्लेशन ऊपर कंप्लीट डिस्कशन मु करिछि पूर्वरु पढैछि एटी प्रथम हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विल नॉट बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय हायर इन्फ्लेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विल नॉट बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय हायर इन्फ्लेशन बा जेतोल प्राइस एटी बहुत अधिक बढ़ी जाउछि या भीतर को क्लास ऊपर अधिक रु अधिक नेगेटिव इंपैक्ट पड़िबो नाही कंज्यूमर क्लास तामाने जे कंज्यूम करूछि कंज्यूमर क्लास जे कंज्यूम करूची ना डेटर क्लास ना पेंशनर जे पेंशन नउची ना बिजनेस क्लास कहा ऊपर सबटु कम इंपैक्ट पड़िबो इन्फ्लेशन नो सबटु कम इंपैक्ट कहा ऊपर पड़िबो ये चारटा सेक्शन ऊपर बहुत सिंपल समस्त करि परिबे इन्फ्लेशन क्लास रे लास्ट टाइम मु बुझैछि जल्दी कोंदु लिप्सता पचार तो टेस्ट विषय रे कथा हिता आई विल अपडेट ऑन दिस यहाँ पर एग्जैक्ट अपडेट एपर्यंत आई हैव नॉट रिसीव्ड मु कहिबी नेक्स्ट क्लास रे कहिबी वेडनेसडे क्विक समस्त कोंदु कहा ऊपर अधिक रु अधिक इंपैक्ट पड़िबो नाही एटी कोन हुए दीटा टॉप पॉइंट ऊपर मु डिस्कस करथि गोटेला फिक्स्ड इनकम ग्रुप आ गोटेला वेरिएबल इनकम ग्रुप कोन कहली गोटेला फिक्स्ड इनकम ग्रुप आ गोटेला वेरिएबल इनकम ग्रुप फिक्स्ड इनकम ग्रुप रे को माने आसीबे ना लाइक जो माने सैलरीड पर्सन बा जो माने पेंशनर से माने आसीबे वेरिएबल ले को माने आसीबे वेरिएबल ले को माने आसीबे ना बिजनेस क्लास जो माने बिजनेस करछन सो वेरिएबल कोन करिवो ना प्राइस बढ़ी गला इन्फ्लेशन हे गला सेटा सर्विस रो रेट बढ़ाई देबो सर्विस रो रेट बढ़ाई देबो तो ता पर इंपैक्ट कमी जिवो एमाने प्राइस बढ़िले भी ताका सैलरी निजे बढ़ाई परिबेनी गवर्नमेंट हाथ रहउछ सैलरी माने निजे बढ़ाई परिबेनी बिकॉज़ सेटा कहा हाथ रहउछ ना गवर्नमेंट हाथ रहउछ हैला सो एठी हम देखले कोन ताले लेस इंपैक्ट कहा ऊपर पड़िबो फोर्थ ऑप्शन ट्रू और फॉल्स कहा ऊपर पड़िबो फोर्थ ऑप्शन बिजनेस क्लास ऊपर पड़िबो क्लियर बिजनेस क्लास ऊपर केमति पड़िबो समस्त बुझी पाले समस्त क्लियर लिप्सा सौदामिनी लक्ष्मी रोहित यस मोना क्लियर बहुत बढ़िया तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा when there is high inflation in the economy how will it affect the supply of money inflation rate high money supply ऊपर कौन impact पड़िबो
इन्फ्लेशन अर्थ ये कौन बुझ ये भल भाव इन्फ्लेशन माने देयर इज मोर डिमांड सॉरी प्राइस हाइक मोर प्राइस हाइक हो जाइए हाँ कि नहीं प्राइस हाइक हो कि नहीं यार डिमांड ऊपर कौन इंपैक्ट पड़ो सॉरी मनी सप्लाई ऊपर कौन इंपैक्ट पड़ो इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी भाभी कहबे समस्त मनी सप्लाई कौन प्राइस हाइक हो जाइए तो डिमांड अधिक मनी सप्लाई कौन हम ना मनी सप्लाई इंक्रीज हो मनी सप्लाई कौन हम इंक्रीज हो बुझेगा कहीं इंक्रीज हम बुझेगा क्लियर समझते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इंक्रीज हम नॉट डिक्रीज कहीं इंक्रीज ना प्राइस बढ़ीगला सो प्राइस बढ़िले कौन हम डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ी अर्थ डिमांड बढ़ी डिमांड केतेबेले बढ़िबो जेतेबेले मनी सप्लाई अधिक अछि मो पाखरे अधिक मनकर मु 10 टका दे पेन यूज करछि मो पाखरे अधिक टका हेगला तो 50 टका पेन डिमांड करी बुझिउछि कि नहीं सो प्राइस अधिक माने मनी सप्लाई बढ़ी डिमांड बढ़ी बारु प्राइस बढ़ी एवं मनी सप्लाई मध्ये इंक्रीज होइछि Next, when too many funds are hunting down too few goods, the probable result of inflation is recognized as यार अर्थ होची कोन से बहुत सिंपल क्वेश्चन ता माने किछि स्पेसिफिक गुड्स रो प्राइस ये कोची बढ़ी गला किछि ये कोन कहउची ना किछि स्पेसिफिक गुड्स रो ये कोन कहउची ना किछि स्पेसिफिक गुड्स रो प्राइस एटी इंक्रीज हे गला ताले ये इन्फ्लेशन को हमें कोन कहबा द प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन कोन कहबा काहे कि ना से स्पेसिफिक गुड्स रो प्राइस बढ़िवार कारण होची तार डिमांड बढ़िला मनकर आम देखा रज सावित्री बेले डिमांड बढ़ीगला फ्रुट्स कहीं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फलमूल से समय दरकार तो मोर डिमांड प्राइस हाइक एंड हिंस इन्फ्लेशन दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन कौन कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन यस और नो बुझेला कि नहीं डिमांड पुल इन्फ्लेशन बुझेला कि नहीं जी टॉपिक आम पढ़ुचे जी पॉइंट ऊपर आम डिस्कस करुचे समस्त बुझी पार्टी ना क्या डाउट अच्छे जहाँ जहाँ आम पढ़ुचे जी सेसन मुझे आरंभ क्लास रे नेली यूट्यूब रे इटा समस्त बुझी आसुची समस्ते क्लियर यस ठीक अच्छे जी जहाँ बुझुंट न बुझुंट डाउट हो क्लारिटी आसुची कि नहीं हेल्पफुल हो कि नहीं समस्ते कमेंट सेक्शन लिखिक कहे ये जो क्लास करुचे आम से क्लास रो कमेंट सेक्शन में समस्त कहे लिखिकी कि व्हाट इज द बेनिफिट आउट ऑफ दिस क्लास so this is like a motivation बुझेला समस्त को एडिटोरियल एनालिसिस भी होची जो क्लास आसुची से क्लास रो जदी कहा को किछि बेनिफिट मिलुची इन एनी वे प्रीलिम्स पाई मेंस पाई कांसेप्चुअल क्लैरिटी पाई ताले समस्त कहबे कि एई जगह मध्ये बेनिफिट मिलिला ठीक अछि ताने आज रो क्लास रे हम को पॉइंट ऊपर डिस्कस कले जस्ट 2 मिनिट समरी को पॉइंट ऊपर हम एटी डिस्कस कले कौन शिखिले आज रो क्लास रो क्विक
प्रथम तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कले छाड़ दियो. Then we talked about planning. Planning in India, different types of plan. Planning ର meaning देखिले, what is the meaning of planning. Most important आमे कौन पढ़िले, इटा important, imperative and indicative planning. Imperative and indicative type of planning. Then certain MCQ practice कले. No problem, revision करो समझते. सौदामिनी जोटा को ठीक कथा, टिके रिवीजन कले सब क्वेश्चन आंसर ठीक हवा. आई एग्री कंप्लीटली. हमें आउरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करियो. डोंट वरी, बहुत क्वेश्चन एटी प्रैक्टिस करेबी, सो दैट यू विल हैव अ क्लैरिटी ऑन एवरीथिंग. सब ऊपर क्लैरिटी आसीबो, किछि व्यस्त होवार नाही. सब प्रैक्टिस करबा. यदि कार किछि स्पेसिफिक क्वेश्चन अछि तार पचारन. यदि कहार किछि स्पेसिफिक क्वेश्चन अछि ताहले पचारन. एनी डाउट, सजेशन, रिकमेंडेशन समस्ते कमेंट सेक्शन में लिखिए. आफ्टर द क्लास इट आसी जीवो ऑटोमेटिकली. चैट टा बंद होके कमेंट आसी जीवो. यू कैन पुट योर कमेंट्स देयर. ठीक अछि. ओके. All right, then that's all for this session. We'll discuss more in the next class. Thank you everyone. Thank you very much. Next class, Wednesday, Thursday economics, same timing. Wednesday, Thursday economics, same timing. Thank you. Have a good day.